आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूज्ड कार्स दैट यू कैन गेट अंडर रुपीज 2 लाख। एंड द फर्स्ट कार इन द लिस्ट इज द Hyundai i10। Hyundai i10 इंडिया में बहुत साल से सेल पे, एंड फॉर 2 लाख रुपीज यू कैन एक्चुअली गेट अ 2010 और 2011 i10 इन डिसेंट कंडीशन। द i10 वाज एक्चुअली अ वेरी गुड हैचबैक। इसमें जो क्वालिटी आपको मिल जाती थी वो जमाने के हिसाब से दैट वाज क्वाइट नाइस, एंड द कार वाज आल्सो एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव। It was easy to maintain. Some spare parts were reasonable, some spare parts were expensive also, but overall the car was trouble free and reliable. तो अगर आपको 2 लाख रुपए के बजट में हैचबैक चाहिए थोड़ी अच्छी खासी, यू कैन गेट द i10। इसमें आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज एंड दैट्स इट। टॉप एंड वेरिएंट में आपको स्पॉइलर मिलता है, रियर वाइपर मिलता है, सनरूफ भी मिल जाता है, बट दोज वेरिएंट्स कुड बी अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव। This car came with a 1.1 liter engine shared with the Santro Zing. इसमें 1.2 भी आया था, and this had a 5-speed manual, but there was an automatic gearbox also. Automatic variants could again be little more expensive, तो 2 लाख रुपए में वो ढूंढना difficult हो सकता है। And the next car is another Hyundai, which is the Hyundai Eon. Hyundai Eon आई थी as a Maruti Alto rival, and इसमें 800cc का engine आता था। It looked very funky and stylish. Interior भी काफी decent था, but the car was cramped, and again it did not sell in very high numbers. Decent numbers में बिकी थी, बट अगर आपको ये बजट में लेनी है हुंडई की गाड़ी, आई वुड से गेट द i10 इंस्टेड ऑफ द Eon. The next on the list is a sedan which is the Maruti SX4. The SX4 is something which needs no introduction. काफी बढ़िया सेडान निकाली थी मारुति सुजुकी ने वो जमाने में, एंड राइट नाउ फॉर 2 लाख रुपीज इट आई थिंक मेक्स फॉर अ डिसेंट परचेस। इट केम विद अ 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर डीजल इंजन। 2 लाख रुपए के बजट में डीजल मिलना शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट यू कैन एक्चुअली गेट अ पेट्रोल कार इन गुड कंडीशन 2007 से 2009 की मॉडल for 2 lakh rupees. And the SX4 was actually decently comfortable to drive. ज्यादा स्पेस इसमें आपको मिल जाती थी, वेरी स्पेशियस कार, एंड अगेन इट वाज रिलायबल। ज्यादा महंगा नहीं था इसका मेंटेनेंस। some parts could be expensive here and there, but overall it was very reasonable to own, and people who actually bought the SX4 they actually really swear by their cars. So I think this is a good option 2 लाख रुपए के बजट में अगर आपको अच्छी खासी सेडान चाहिए, you can check out the SX4. The next on the list is another Japanese car which is the Nissan Micra. Nissan Micra की 2010-11 मॉडल आपको 2 लाख रुपए में आराम से मिल जाएगी। इनफैक्ट यू कैन इवन गेट द सेडान काउंटरपार्ट व्हिच इज द Nissan Sunny फॉर दैट प्राइस। गाड़ी की जो बेस मॉडल है XE एंड जो मिड वेरिएंट है XL वो आपको आसानी से मिल जाएगी। टॉप एंड XV वेरिएंट could be a little more expensive by 20, 30, 40,000 rupees. Nissan Micra came with a 1.2 liter petrol engine. Nissan Sunny came with a 1.5 liter petrol engine. दोनों में डीजल भी था, लेकिन डीजल आपको 2 लाख रुपए में शायद नहीं मिल सकता है, बट पेट्रोल शुड बी गुड इनफ फॉर दैट बजट। द कार हैड डिसेंट क्वालिटी ऑन द इनसाइड। इंटीरियर का डिजाइन जो थी वो थोड़ी ऑड थी, बट आई थिंक फॉर दिस बजट यू कैन नॉट रियली कंप्लेन। दोनों कार्स में आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती थी। सनी में ऑफ कोर्स आपको पीछे लेग रूम काफी ज्यादा मिलती थी, बूट भी इसमें आपको बड़ी मिल जाती थी। सो यू सी व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको सेडान चाहिए गेट द सनी, हैचबैक से अगर आप खुश हो गेट द माइक्रा। इश्यू इज कि आपको रिमोट एरियाज में स्पेयर पार्ट्स इसके शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन इन मेजर सिटीज एंड टाउन्स दैट शुड नॉट बी एन इश्यू बिकॉज Nissan Sunny especially काफी अच्छे numbers में बिकी थी, and even now people use it as a cab. The next car on the list is a tall boy hatchback which is the Maruti Suzuki Ritz. 2 लाख रुपए के बजट में you'll get a 2009 or 2010 model easily, and this one was offered with a 1.2 liter petrol engine or a 1.3 liter diesel engine. ये प्राइस रेंज में आपको दोनों मिल सकती है। डीजल शायद थोड़ी कम ऑप्शंस मिलेंगे, पेट्रोल तो आराम से मिल जाएगी। एंड इफ यू बाइंग अ डीजल कार ऑफ दिस विंटेज यू विल हैव टू चेक द कार फॉर हाई रनिंग बिकॉज द रनिंग वुड बी मोर देन 1 लाख किलोमीटर्स फॉर श्योर। तो उसमें एज रिलेटेड मेंटेनेंस आ सकता है। पेट्रोल विल ऑफ कोर्स हैव सम मेंटेनेंस बिकॉज गाड़ी इतनी पुरानी है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा उसमें, बट इट शुड बी रिलायबल एंड यू नो वेरी रीजनेबल टू मेंटेन। द Ritz had decent quality on the inside. फीचर्स इसमें आपको बेसिक मिल जाते थे, एंड द कार वाज एक्चुअली कंफर्टेबल। इट हैड अ लॉट ऑफ स्पेस, एंड जो इसके ड्राइविंग मैनर्स थे वो भी काफी अच्छे थे। तो 2 लाख रुपए के बजट में अगर आपको एक डिसेंट हैचबैक चाहिए, यू कैन गेट योरसेल्फ अ मारुति सुजुकी Ritz. The next on the list is another hatchback from Maruti Suzuki, the highest selling hatchback in India, the Swift first generation. 2 लाख रुपए के बजट में आपको ये मिल जाएगी आराम से। 2007-8 का मॉडल भी मिल सकता है, बट दैट विल बी द पेट्रोल मॉडल। अगर आपको डीजल चाहिए देन इट विल बी अ लिटिल ओवर 2 लाख रुपीस, बट 2 लाख में पेट्रोल तो आराम से मिल जाएगा। देयर वर 3 वेरिएंट्स ऑन ऑफर, LXi, VXi, ZXi, एंड LXi और VXi तो आपको आराम से मिल जाएंगे। ZXi was sold in limited numbers because back in the day जो top end variant लेने का फैशन था वो थोड़ा कम था, and people used to prefer mid variants a lot more. तो mid variant में ABS स्टैंडर्ड नहीं आता था एट दैट टाइम, इट वाज ऑप्शनल। VXi ABS, VDI ABS, एंड तो आपको मिल गया ABS वाला वेरिएंट, देन वेल एंड गुड, बट अगेन यू कैन अदरवाइज गेट द नॉन ABS वेरिएंट। ये वाली गाड़ी स्विफ्ट में ज्यादा फीचर्स नहीं थे, बट इट वाज स्पोर्टी टू ड्राइव एंड इट लुक्स गुड इवन टुडे। स्पेयर पार्ट्स इसके आराम से मिल जाएंगे बिकॉज इट सोल्ड इन सच हाई नंबर्स,
and overall maintenance and upkeep should not be an issue with the Swift. So I think this is a strong contender in this entire list. ये प्राइस रेंज में अगर आपको एक और कोई सेडान का ऑप्शन चाहिए, then you can check out the Swift Desire also, the first generation model of similar vintage 2009-10. वो आपको 2 लाख रुपए में पेट्रोल मॉडल मिल सकती है एंड उसके भी स्पेयर पार्ट्स का कोई इशू है नहीं बिकॉज आज भी एज अ टैक्सी ये गाड़ी काफी पॉपुलर है. एंड नाउ वी मूव ऑन टू होंडा. विद होंडा वी हैव द फर्स्ट जनरेशन जैज जो 2009 और 10 वाली मॉडल थी वो आपको 2 लाख रुपए में मिल सकती है एंड दैट केम विद अ 1.2 लीटर आईवी टेक इंजन. Engine was good in terms of smoothness and refinement. Performance भी इसका ठीक ठाक था, not bad at all, and the quality on the inside was actually on another level with the Jazz. Now, because this was a global car and it did not have any sort of cost cutting at all, this car actually had very good materials on the inside, and जो इसके driving manners थे वो भी काफी अच्छे थे. The good thing about the Jazz is that it was actually very spacious and the interior was practical on another level. So if you can get a good Jazz for 2 lakh rupees, don't let the car go. Maintenance will be on the medium side, not very cheap, not very expensive, but the parts actually are very reliable. तो अगर आपने एक बार कोई part change कर लिया then it will actually last for a lot of years. तो Honda Jazz is again a very nice option. 2 लाख रुपए के बजट में अगर आपको Honda City चाहिए, you will get the 2009-2010 model easily. Third generation की pre facelift model with the 1.5 liter IV Tech petrol engine. The Honda City manual is actually very easy to find. इतनी सारी Honda City बेची है Honda ने, तो गाड़ी अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाएगी आसानी से. Automatics are also available, but automatics command a premium. तो 2 लाख रुपए में ऑटोमेटिक ढूंढना in good condition will be a little tricky. Manual तो अच्छी खासी मिल जाएगी and the car is actually very trouble free to own. उसके भी parts कुछ थोड़े महंगे होते हैं, but the parts actually last really long and with reasonable upkeep the car should last for a few more years. So that is not an issue. इसमें आपको थोड़ी प्रीमियम फील भी मिल जाएगी, lot of space on the inside, good driving fun also. तो अगर आपको थ्रिल्स चाहिए बजट में 2 लाख रुपए में get the third generation Honda City. The next on the list is the first generation Hyundai i20. Hyundai i20 came to India in 2009. 2009-2010 वाली मॉडल आपको 2 लाख रुपए में मिल जाएगी. In that time it came with a 1.2 liter कप्पा पेट्रोल engine. Good engine. The quality of the interior was very nice with the i20. Again global model थी ये, तो इसमें आपको काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिल जाती थी and the feature list was also decent for a car of that age. The Hyundai i20 looked good. It had a spacious cabin and of course it was not very thrilling to drive, but आज भी काफी decent package है, तो 2 लाख रुपए में आपको मिल जाए. You should actually check it out for sure. The issue with the first generation i20 is that some of the spare parts could be on the expensive side. तो वो आपको चेक करना पड़ेगा एक बार आपकी सिटी में and if you can see, you can probably find aftermarket options, then that would be a good thing to do. The next car on the list is another sedan which is the Skoda Laura. Skoda Laura की जो फर्स्ट मॉडल थी या फिर Skoda Octavia की जो लास्ट मॉडल थी वो आपको दोनों चीजें मिल जाएगी 2 लाख रुपए में. And of course out of the two I would prefer the Laura because it was a lot more modern compared to the Octavia. Now the diesel manual model should be available at 2 lakh rupees easily. Lot of options in the market, but most of these cars have very high running in excess of 1.5 lakh kilometers and उसमें वो age के हिसाब से and of course because of the complex engineering of the car, the maintenance could be on the higher side. Spare parts मिल जाएंगे because it's a global car, तो बाहर से भी आप मंगवा सकते हो spares, but some of the parts could be expensive and if you're buying something strictly on a budget, you could be in for a rude shock if something like the AC fails or any major thing goes off on this car. Otherwise the car is fun to drive. आज भी ये गाड़ी चलाने में काफी मजा आता है, तो अगर आपका वो appetite है उसको maintain करने का, you should actually check it out for sure. Another sedan in this list is the Tata Indigo Manza. ये basically Indica Vista की sedan counterpart है, तो 2 लाख रुपए में आपको Indica Vista भी मिलेगी, Manza भी मिलेगी, पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे. बट अगेन इट वाज नॉट द बेस्ट टाटा कार दैट वी हैव सीन. टाटा की इससे अच्छी गाड़ी हम लोग ने देखी एंड in today's time I would not recommend buying any of these cars because ये गाड़ी भले स्पेशियस है, प्रैक्टिकल है, अच्छे इंजन के साथ आती थी, बट मेंटेनेंस could be an issue with these cars. So अगर आपको मतलब बेटर ऑप्शंस मिल रहे then I think you should check out other better options for this price. And the next car on this list is actually a personal favorite, the old Honda Civic. Honda Civic भी मार्केट में भर के पड़ी in the used car market and the demand is less because of the low ground clearance and the fuel economy of this car which hovers around the 7-8 kilometers per liter mark. 2 लाख रुपए में आपको सिविक अच्छी खासी मिल जाएगी, मैनुअल तो आराम से मिल जाएगी, ऑटोमेटिक कुड बी अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव एंड द कार इज एक्चुअली वेरी प्रीमियम. दिखने में आज भी काफी अच्छी लगती है, काफी फंकी लगती है एंड विद द 1.8 लीटर आईवी टेक इंजन इट इज स्टिल वेरी फन टू ड्राइव. इसके स्पेयर पार्ट्स का कोई भी इशू नहीं है, आफ्टर मार्केट आपको मिल जाते हैं, कंपनी के मिल जाते हैं, मॉडिफिकेशंस की भी इसमें कोई लिमिट नहीं है. सो ओवरऑल द सिविक इज एक्चुअली अ वेरी गुड कार टू ओन. खाली मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा होगा, माइलेज थोड़ा कम होगा. नाउ वी हैव द होंडा अकॉर्ड. For 2 lakh rupees, you can actually get the 2006-7 Accord very easily.
2009 वाली जो न्यू शेप अकॉर्ड आई थी, दैट कैन ऑल्सो बी हैड फॉर 2 लाख रुपीज. And of course, the V6 variants will be expensive, around 3 lakh rupees, but the 2.4 manual and automatic variants should be available in decent numbers for this price. तो Honda Accord काफी बड़ी है, काफी spacious है, बहुत comfortable गाड़ी. It is very decent to drive also, but again, the mileage will be very low, 5-6 kilometers per liter at the max, and spare parts could be a little on the pricey side. But गाड़ी overall काफी reliable है. So just like any other Honda, once you service it on time, once you replace the spares on time, the car should last a few more years easily. So that's about it from my side. अभी मैं आपको बताऊंगा एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है फॉर 2 लाख रुपीज. इफ यू वांट अ बिग एसयूवी एंड यू वांट समथिंग व्हिच इज वेरी पॉपुलर आल्सो, जापानीज एसयूवी चेन, देन यू विल एक्चुअली गेट योरसेल्फ अ टोयोटा क्वालिस. टोयोटा क्वालिस बहुत लिमिटेड नंबर्स में मिलती है यूज कार मार्केट में, और आज भी इसकी डिमांड काफी अच्छी खासी है. स्पेयर पार्ट्स आर नॉट अ मेजर इशू विद दिस कार, एंड पीपल स्टिल लाइक इट फॉर इट्स यूटिलिटेरियन नेचर. तो 2 लाख रुपए में अगर आपको अच्छी क्वालिटी की क्वालिस मिल जाए, then you should not let it go if it suits your requirement. And I also have a few cars which you should actually avoid in this budget, and you should avoid the Ford Fusion, the Mahindra Verito, the Datsun Redigo and the Datsun Go. ये सब गाड़ियाँ avoidable है ये price point पे. So this was a list of some of the best used cars you can buy for 2 lakh rupees in India. Now the next video will focus on some of the best cars you can buy for 3-4 lakh rupees. उसके बाद ज्यादा बजट की भी हम बात करेंगे. So that's it for now. ये लिस्ट में से आपकी फेवरेट कौन सी थी बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में.